what is parts or what are parts of speech? तो सबसे पहले you need to know about speech, what speech is. तो आपको पता है कि speech is the words that we utter, जो जितने भी अल्फाज हम बोलते हैं तो we call them speech. तो फिर जितने भी हम words बोलते हैं तो they are divided into different parts. Some function as a noun and some function as a verb, some as adjective. So all these are parts of speech. And according to, we are following the traditional grammar. So according to the traditional grammar, we have 8 parts of speech. They are noun, verb, adjective, pronoun, adverb, preposition, conjunction, and then interjection. So what actually part of speech explains? The part of the speech explains us like how a word is used in a sentence or how a word is used in a पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का क्या मीनिंग है, किस तरह से वो यूज हुआ है, और फिर वही सेम वर्ड जब आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो तो फिर वो किस तरह, फिर उसकी फंक्शन उस कॉन्टेक्स्ट में उसका फंक्शन क्या होता है. सो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स अस. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट द वर्ड क्राइज, द प्लूरल ऑफ वर्ड क्राई, क्राइज. ठीक है, CRIES. For example, they heard high-pitched cries in the middle of the night. They heard high-pitched cries in the middle of the night. Now, you know that cries is a verb, okay, like crying, cries. This mostly we see this as a verb, but in this sentence, the cries, this is acting as a noun. Okay, this is acting as a noun. But if I use the same cries in another example, for example, the baby cries all night long, all night long. The baby cries all night long. So here cries is used as a verb. So the same verb when used differently, they functions differently, they mean differently. So this is what the part of speech explains us. Then there are 8 parts of speech and they are in front of you. So the first part of speech that we are going to cover is noun. Okay. So in noun, we are going to study the definition of noun. Then there are some terms associated with noun. And finally, the types of nouns along with the examples. We will do each and every type in detail. So what is a noun? Noun kya hai? A noun is a word to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. These are the 5 areas which a noun names. ठीक है, noun इनको नाम देता है. किनको? एक person को, animal, place, thing, and abstract idea. For example, एक example आपके सामने है. Last year, our neighbors bought a goat. Last year, our neighbors bought a goat. अब आप इसमें देखिए जो neighbors हैं, ठीक है, सबसे पहले if we deal with the neighbors, that falls under the category of people. जहाँ when we say a noun is a word to name a person, so here there is a category of people, and then there is an animal, goat, and then there is an abstract idea, year. Okay, so last year our neighbors bought a goat. So these 3 are nouns in the sentence. There are also some other examples like the bus inspector looked at all the passengers' passes. Now, the bus inspector, so bus, what is bus? Bus is a thing, okay, it's a thing. Inspector again fall under the category of people, and then again passengers, and then passes again is a thing. So a noun is a word to name a person, animal, place, thing, and an abstract idea. This is just the definition, and then when we study some terms and then the types of nouns, so you're going to get a clear idea at the end. Okay. Now, before doing the types of nouns, there are some terms which do not fall under the category of types. ये types नहीं है, these are some terms associated with noun. They are noun gender, noun plurals, and then possessive nouns. ठीक है, ये 3 terms हैं जिसको आपको idea होना चाहिए कि ये क्या है. Now, what is noun gender? अब पहले क्या होता था, earlier before, ठीक है, अभी की बात नहीं है, पहले ज़माने की बात है, like many years ago,
क्या होता था कि they were completely distinguished terms used to describe a male and a female. ठीक है, मेल और फीमेल को डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग वर्ड्स यूज होते थे. फॉर एग्जांपल आजकल हम कहते हैं राइटर. ठीक है, राइटर के अंदर क्या आता है, राइटर के अंदर आपके पास मेल राइटर भी होते हैं और फीमेल राइटर्स भी होती हैं. लेकिन अर्लियर इट्स स्टिल इन प्रैक्टिस बट नॉट एज इट यूज्ड टू बी बिफोर. पहले क्या होता था, पहले हम उसको मेल राइटर को हम ऑथर कहते थे एंड देन फीमेल ऑथरेस. आज भी कहते हैं बट द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इज लाइक यूजिंग द वर्ड राइटर टू डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल बोथ. एंड देन देयर आर सम अदर एग्जांपल्स, जैसे कि हम इंजीनियर देखते हैं. इंजीनियर जब हम सुनते हैं सो इट कुड रेफर टू अ मेल इंजीनियर और इट कुड रेफर टू अ फीमेल इंजीनियर. सिमिलर केस इज विद द टीचर. टीचर कुड रेफर टू अ मेल टीचर और टीचर कुड रेफर टू अ फीमेल टीचर. तो आजकल तो हम ये ऐसे ही जो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है, दे आर न्यूट्रल. they could be used for female, they could be used for male. But earlier practice was not like this. Earlier practice was they used distinguished terms for the male and female to refer to the both genders, like author and authoress, waiter and waitress, and they are still in practice. ठीक है, आजकल भी यूज होती है बट जस्ट सेइंग कि उनका यूज काफी हद तक कम हो गया है. और पे कुछ ऐसी एरियाज है जहाँ पे इनका यूज जो बहुत जरूरी होता है. सो दे आर लाइक एट द एग्जांपल्स. देखिए, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, डेविड गैरिक, which is the main subject, the performer. Just the whole sentence is about this person, David Garrick. He was a very prominent 18th century actor. देखिए, अब हम एक पूरा सेंटेंस किसी इंसान के बारे में है, and that is David Garrick, and in the end we are referring to him. तो हम अब ये नहीं कह सकते David Garrick was a very prominent 18th century actress. ठीक है, हमने एक्टर ही कहना है. और अगर डेविड गैरिक की वजह से की बजाय इंस्टेड हमारे पास अगर कोई फीमेल एक्टर का नाम आता है, ठीक है, सी आई यूज्ड फीमेल एक्टर. आजकल हम एक्टर भी मेल और फीमेल दोनों के यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लाइक एक्ट्रेस वाज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल एंड एक्टर वाज स्पेसिफिकली फॉर मेल. लेकिन look at the example, Sarah Siddon was at the height of her career as an actress in 1780s. अब इधर एक्ट्रेस लिखना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू सारा एंड नॉट डेविड. एंड इन द अबव एग्जांपल वी वर रेफरिंग टू डेविड एंड नॉट सारा. तो इस केस में दिस जेंडर नाउन्स आर इम्पॉर्टेंट बट generally they are not as important as they used to be. There is another example. The manager was trying to write a want ad, but he couldn't decide whether he was advertising for a waiter or a waitress. अब इधर भी जरूरी है. कैसे जरूरी है? Because ये एक हर रेस्टोरेंट की क्राइटेरिया होती है कि उनको कोई वेटर चाहिए या वेट्रेस, उनको मेल चाहिए या फीमेल. सो ऑब्वियसली दे हैव टू बी क्लियर इन देयर एड कि जो जिनको अप्लाई करना है वो female apply करे या male apply करे. So in this case then the use of gender noun is important. Fine. So certain cases में है important but normally ज़्यादातर cases में like we use the gender neutral terms to refer to male or female. All right. Okay जी. So noun plurals का अगर हम देखें तो nouns, कुछ nouns ऐसे हैं जिनको अगर हम s add करें तो वो उसकी plural form बन जाती है. ठीक है, कुछ नाउन्स के साथ हमें es ऐड करना होता है. देन डिपेंड्स, कुछ नाउन्स अगर उनके लास्ट अल्फाबेट को हम देखते हैं, जैसे कि अगर सिटी है, लेट फॉर एग्जांपल देयर इज सिटी, तो द लास्ट अल्फाबेट इज y. तो अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहें, ठीक है, इस नाउन से अगर हम नाउन प्लूरल बनाना चाहें सो वी डिलीट द y. ठीक है, y को हम हटा के इसकी जगह हम ies को y को ies से रिप्लेस करते हैं, तो फिर वो बन जाता है सिटीज. ओके, और फिर वो क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है. सो डिपेंड ऑन द वर्ड कि वो प्लूरल कैसे बनता है, विद एडिशन ऑफ s, विद एडिशन ऑफ es, विद रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन वर्ड्स. तो आपने ये हर एक वर्ड पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ट्रूथ, ट्रूथ कैन फॉर्म इट्स प्लूरल बाय सिंपल एडिशन ऑफ s. ठीक है, ट्रूथ के साथ आप s लगा लो तो वो बन जाएगा इसका प्लूरल. Now the second word is echo. अब echo को प्लूरल बनाने के लिए आप सिंपल s नहीं लगाते हैं, you place es.
ठीक है, आप ई एस साथ लिखते हो तब भी वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। एंड द सेम केस इज विद बॉक्स, बॉक्स के साथ भी आप एस नहीं लगाते, आप ई एस लगाते हो तो वो बॉक्सेस बनता है और तभी जाके वो अपना प्लूरल फॉर्म अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है। देन एज आई सेड, देन देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो एफ पे अगर एंड होते हैं तो फिर उस एफ को हम रिप्लेस करते हैं विद वी ई एस। एंड इफ देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर लाइक एंडिंग इन वाई, तो उसको हम आई ई एस से रिप्लेस करते हैं, जस्ट लाइक वार्फ विल बिकम वार्व्स एंड देन सिटी विल बिकम सिटीज। एंड देन देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो बिल्कुल इरेगुलरली चेंज होते हैं, जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो माउस की, ठीक है, माउस, ठीक है, द एनिमल, द स्मॉल एनिमल माउस, इसका प्लूरल क्या है? दैट इज माइस, एम ओ यू एस ई चेंज इनटू एम आई सी ई। तो बिल्कुल एक रैंडम चेंज है, कोई इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न इसको फॉलो नहीं करता। एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ फ्लुएंट यू आर इन योर इंग्लिश, ठीक है। आपको इसके लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत जरूरी है, तभी आप जाके आप सिंगुलर से प्लूरल बना पाओगे। Then there is this last term, possessive nouns, ठीक है, possessive nouns। अब possessive nouns क्या होते हैं? Possessive noun shows us that a noun owns something or is related to something, ठीक है। possession क्या होती है? Possession is when you own something, you actually possess that thing. So in the possessive case, a noun or pronoun changes its form to show that it owns or is closely related to something else. कि जो noun है या तो वो किसी चीज को own करता है या फिर उसके साथ बहुत closely related है, ठीक है। और possessive case पर हम कैसे बनाते हैं? There are certain cases, there are 4 cases, ठीक है। 4 cases है जिसके थ्रू हम possessive cases noun के बना सकते हैं। So the first two cases deals with a singular noun, ठीक है, and the other 2 cases deals with a plural noun. देखिए, so like we have case 1, case 2, case 3 and case 4. अब अगर आप case 1 को देखें तो आपने, अगर मैं आपसे कहूँ आपको एक वर्ड दूँ और मैं कहूँ कि आप इसको इसके possessive form में change करें, तो आप कैसे करोगे? आप केस 1 देखें, आपने पहले देखना है कि जो नाउन है इज इट ईदर सिंगुलर और प्लूरल। आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सो लेट्स टेक इसी एग्जांपल से हम देखते हैं फादर, ठीक है, फादर है हमारे पास। सो फादर इज सिंगुलर और प्लूरल, ओके, आई हैव आइडेंटिफाइड इट, इट इज सिंगुलर। फिर आपने सेकंड चीज क्या देखनी है? सेकंड चीज आपने ये देखनी है कि जो फादर का जो लास्ट अल्फाबेट है इट्स एस और इट्स अदर देन एस। अब मुझे ये भी पता चल गया कि इट्स नॉट एस, इट्स अदर देन एस। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर है एंड इट डज नॉट एंड इन एस, तो आपने उस केस में क्या करना है? यू जस्ट टेक एन अपॉस्ट्रोफी एस एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ड। तो क्या हो जाएगा? फादर्स, दिस विल बिकम फादर्स, और ये उसकी पॉजेसिव केस हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में उसको कैसे यूज करते हैं? द ओनली लगेज दैट वाज लॉस्ट वाज माय फादर्स। जो लगेज गुमा था बस वो मेरे फादर का था, जो लगेज गुम गया था, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू लुक एट, आपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखनी है और फिर देखना है कि एंड में जो अल्फाबेट आता है वो एस है या एस से हट के कुछ और है। तो अगर इफ इट्स नॉट एस एंड इट्स अदर देन एस, इट्स आर, इट्स ए, इट्स बी, तो आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है और वो बन जाएगा पॉजेसिव केस। लेकिन अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर तो है लेकिन उसका जो एंड वाला अल्फाबेट है, द लास्ट अल्फाबेट है, वो एस है। फॉर एग्जाम्पल बस, बी यू एस, बस। अगर आप इसमें देखें दिस इज सिंगुलर बट द अल्फाबेट, द लास्ट अल्फाबेट इज एस। तो अब इधर आपके पास 2 ऑप्शंस आती है, ठीक है। फिर आपने इसमें अपने हिसाब से आपको जो ऑप्शन पसंद आता है यू कैन यूज इट। आप ईदर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, दैट वोंट बी रॉन्ग, गलत नहीं होगा। और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप अपॉस्ट्रोफी एस की बजाय आप सिर्फ लास्ट वाला जो एस है उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दो, दैट्स अप टू यू। आप इट्स ईदर इज करेक्ट, दोनों ठीक है। तो आप ऑप्शन 1 पे जाए, ऑप्शन 2 आप चूज करें, सो दोनों ठीक है। द फिल्म क्रू एक्सीडेंटली क्रश्ड द platypus eggs. Now again, platypus is a noun, singular noun and ending in s.
तो आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल पे मैंने उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है और इन द लास्ट एग्जांपल मैंने उसके जो लास्ट एस है उसके ऊपर सिंपल अपोस्ट्रोफी लगा दी है. सो इट्स अप टू मी, जो मुझे पसंद हो बस मैं वो लगा लूंगी. तो ठीक दोनों है, गलत कोई भी नहीं है. So this was the case 2. So these two cases dealt with the singular nouns. Now the other two cases, case 3 and case 4, is going to deal with the plural nouns. अब आपने अगर आपके सामने नाउन है और वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है और उसका जो लास्ट अल्फाबेट है वो एस नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आपके सामने एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, ठीक है. चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है ना, इट्स द प्लूरल ऑफ चाइल्ड. So this is plural and the end alphabet is, the final alphabet is N and not S. तो ये जो है ना बिल्कुल केस 1 फॉलो करेगा. आपने apostrophe S सामने लगानी है, children children's बन जाएगा और ये उसका possessive case बन जाएगा. For example, the children's mittens were scattered on the floor of the porch. ठीक है, okay. लेकिन अगर plural भी है, plural है और end में उसके S आता है. Look at the example diaries. ठीक है, here we are dealing with a case that is noun, that is a plural noun but it is ending in S. अब unlike case 2 जहां आपके पास 2 options थे, इधर आपके पास option नहीं है. आपने क्या करना है कि आपने जब noun plural होता है और वो S पे end करता है तो आपने final जो ending S होता है ना उसके ऊपर आपने apostrophe लगा देनी होती है and that becomes the plural case. ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि आप case 2 में आपके पास ऑप्शन था, आप इधर ऑप्शन चूज कर सकते थे, लेकिन इधर आपके पास ऑप्शन नहीं है. यू कैन नॉट ऐड apostrophe s to the plural nouns ending in s. आप उसको apostrophe s नहीं लगा सकती. You just have to add apostrophe to the plural nouns ending in s. For example, the archivist quickly finished repairing the diary's bindings. देखिए diaries, तो diaries तो ऑलरेडी हमारे पास plural है और s भी है, तो हमने बस क्या किया, बस apostrophe लगा दी. Again, another example, religion is usually the subject of the roommates' many late night debates. अब हमारे पास roommates का word आया है. Roommates is a noun, ठीक है. Roommates noun है और plural है और ending in s. It's ending in s. So we took an apostrophe and placed it over the s. S के ऊपर हम उसको लगाते हैं और वो क्या हो जाता है, इसका possessive case बन जाता है. So these were the 4 cases. They are important for your आप जब डेली आपकी जो डेली राइटिंग होती है तो उसमें और इवन डेली स्पोकन लैंग्वेज में भी चीजें आप याद रखा करें, ठीक है. द पोजेसिव केस स्पेशली बहुत यूज होता है इन योर स्पोकन लैंग्वेज. All right, then we are going towards the types of noun. Then in the noun we have different types. हमारे पास proper nouns and common nouns है. We have concrete and abstract nouns, countable and non-countable nouns, and collective nouns. ये हमारे साथ क्या है, noun की types हैं. इससे पहले जो हमने discuss किए थे, they were not types, they were just certain terms related with the nouns. Okay जी. So number 1 is noun and common nouns. You can compare proper nouns with the common nouns. Why? Because proper noun is the opposite of common noun and common noun is the opposite of proper noun. और इनके बीच का जो major difference है, that is of the specific and general. How? Look at the definition. A proper noun represents the name of a specific person, place or thing. A specific person, a specific place and a specific thing. On the other hand, अगर common nouns की हम बात करें, so that refers to a general person, general place, general thing. ठीक है, उसमें हम किसी चीज को हम specify नहीं करते हैं. How? Look at the examples of the proper nouns first and then the common nouns. Many people dread Monday mornings. Okay, before the examples, keep one thing in your mind. आपके पास जितने भी week में जो days होते हैं, like Monday, Tuesday, Wednesday, up months, historical documents, institutions, organizations, religions, ठीक है, कोई holy text आप ले रहे हो, all these are
प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन्स है, और प्रॉपर नाउन्स यू राइट प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर। आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है या सेंटेंस के बीच में आता है या सेंटेंस के एंड में आता है, नो मैटर वेयर इट अपीयर्स इन द सेंटेंस, आपने उसको क्या करना होता है, कैपिटल लेटर से लिखना होता है, एंड यू नो दिस पॉइंट। सो मैनी पीपल ड्रेड मंडे मॉर्निंग्स। Monday, Monday is a noun. That's the day of a week. The days of the week are proper nouns. So Monday is a proper noun, and I have written Monday with capital M. And on the other hand, अगर आप देखिए तो many child workers are unpaid. Workers here is a noun. But like generally I'm talking about all the child care workers. मैं जितने भी child care workers हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि सब they are all underpaid. मैं किसी स्पेसिफिक वर्कर को पॉइंट आउट नहीं करती। अगर मैं किसी स्पेसिफिक वर्कर को पॉइंट आउट करती तो दैट वुड बी देन अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, उधर वो प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि फिर मैं उसका नाम मेंशन करती, एंड नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स। लेकिन इधर मैं जनरली सब वर्कर्स की बात करती हूँ, जितने भी चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं। सो दिस इज अ जनरल कैटेगरी। सो workers is a common noun, and you write common nouns with small alphabets. You begin them with small alphabets, ठीक है, आप उसको small letters से लिखते हो। एक केस है जहां आप कॉमन नाउन्स को भी कैपिटल से लिखते हो, एंड दैट इज व्हेन दे अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है और वो कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली दैट्स अ सेंटेंस रूल कि आपने उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है। नहीं तो अगर फिर वो उसके बाद आता है, बीच में आता है या फिर एंड में आता है, सो यू क्या करते हो, आप उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हो। There are some other examples, look at them if you want to note them down or if you want to read them. Beltane is celebrated on the 1st of May, ठीक है, एक specific event का नाम है, and that's begin with a capital B. Then there is name of a month, and that begins with a capital M, and these are the proper nouns. And on the other hand, according to the sign, the nearest town is 60 miles away. अब हम किसी साइन को स्पेसिफाई नहीं है कि किस साइन, अकॉर्डिंग टू विच साइन, लेकिन जस्ट कहा है कि अकॉर्डिंग टू साइन, ठीक है। सो कॉमन नाउन अगेन टाउन, किसी टाउन कोई, देयर आर डिफरेंट टाउन्स एंड ईच टाउन हैज इट्स ओन नेम। तो इधर किसी टाइम जो टाउन है उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा टाउन। सो अगेन टाउन इज अ कॉमन नाउन एंड देन सो ऑन, ठीक है। So this was about proper and common nouns. The main difference is proper noun, they refer to general people, they refer to specific people and places and things. And on the other hand, common nouns, they refer to everything and every person in general. Then the next category is concrete nouns and abstract nouns. Again, अगर हम बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन्स जो हमारे पास है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के ऑपोजिट हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं दे आर द ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स। अब कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, लेट्स स्टडी देम। अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन व्हिच नेम्स एनीथिंग और एनीवन that you can perceive through your physical senses like touch, sight, taste, hearing or smell. And an abstract noun is a noun which names anything which you cannot perceive through your 5 physical senses. ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये फर्क है कि अगर कोई नाउन आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल डॉग इज एन एनिमल, दैट्स अ नाउन, यू कैन परसीव इट थ्रू योर आईज, ठीक है, आप उसको टच कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कोई लेट्स टेक हैप्पीनेस, अगर कोई हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस इज अ वर्ड, दैट्स अ नाउन। Can you perceive it through your senses? No, you cannot touch happiness. आप उसको touch नहीं कर सकते। So dog is the concrete noun and happiness is the abstract noun. ठीक है, ये इनका फर्क है बीच में। Let's look at the example. Whenever they take the dog to the beach, it spends hours chasing waves. Now dog, noun, and concrete noun, beach. बीच को भी आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, यू कैन परसीव इट थ्रू योर सेंसेस, तो दैट इज आल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन। एंड अगेन वेव्स, ठीक है, वेव्स भी आपको नजर भी आती है, आप वेव्स को भी टच कर सकते हो। सो अगेन वेव्स इज द कॉन्क्रीट नाउन। द रियल एस्टेट एजेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल, द रियल एस्टेट एजेंट अर्ज्ड द कपल टू बाय द सेकंड हाउस बिकॉज इट हैड न्यू शिंगल्स। वो नाउन्स को पॉइंट आउट करें, एजेंट है, मैंने उसको बोल्ड भी किया है, एजेंट है, कपल, हाउस एंड शिंगल्स, दीज आर द नाउन्स इन दिस सेंटेंस।
और सारे ऐसे हैं जिसको आप you can perceive them through your senses, so all of them are concrete nouns. और अगर आप abstract nouns की examples को देखें, so justice often seems to slip out of our grasp. अब justice is also a noun. ठीक है, आपको ये सेंटेंस आपके सामने आएगा और आपसे जस्टिस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कहे कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, सो यू वुड ऑब्वियसली से दिस इज नाउन. लेकिन फिर नाउन की किस टाइप के अंदर आता है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट परसीव इट थ्रू योर फिजिकल सेंसेस. Some scientists believe that schizophrenia is transmitted genetically. अब schizophrenia is a disease. Diseases क्या होती है? They are mere ideas. ठीक है, ये ideas होती है. आप you just feel them, you just go through them, but you cannot like see them, you cannot taste your disease, you cannot hear your disease. So disease, any kind of disease is also an abstract noun. ठीक है, that abstract noun के अंदर आता है. Noun is quite a simple topic. बहुत इसमें ordinary चीजें हैं जो आपको already पता होती हैं. Okay. Anyway, countable nouns and non-countable nouns. अच्छा, countable nouns को हम count nouns भी कहते हैं और जो हमारे पास non-countable nouns हैं उनको हम mass nouns भी कहते हैं. So what's again, जिस तरह के अभी तक हम करते आ रहे हैं कि wait, proper nouns and common nouns are the opposites of each other, and then concrete and abstract nouns are the opposites of each other. In the same way, countable and non-countable nouns are also the opposites of each other. So what is a countable noun and what is a non-countable noun? A countable noun is a noun with both singular and plural form, and it names anything that you can count. अच्छा, आपको कभी डिफिकल्टी हुई, कोई आपके सामने कोई वर्ड है और आप सोचे कि ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, फिर आप सोचते हो कि हाँ ये काउंटेबल है, एंड देन समथिंग स्टक्स योर माइंड एंड आप कहते हैं कि नहीं ये तो काउंटेबल नहीं है, ये शायद नॉन काउंटेबल होगा. क्योंकि मुझे अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम होती थी और अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है. सो देयर इज अ फाइन ट्रिक, एक फाइन है कि अगर कोई नाउन है आपके सामने और आप पहले सोचो कि इसका प्लूरल फॉर्म आप बना सकते हो या नहीं. ठीक है, तो जिन नाउन्स के आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हो दैट आर काउंटेबल नाउन्स, और जिन नाउन के बस एक ही फॉर्म होता है और वो होता है सिंगुलर फॉर्म, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता. अच्छा, एग्जाम्पल को आप काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल को देखें. सबसे पहले एग्जाम्पल में टेबल है और चेयर्स. We painted the table red and chairs blue. तो अब chairs तो आपके पास ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है ना, वो प्लूरल फॉर्म में है आपके पास, तो इसका मतलब कि वो तो काउंटेबल है. अब आप टेबल को देखें, टेबल से आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हो. यस, बिल्कुल बना सकते हैं. आप टेबल के साथ एस ऐड करें और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा टेबल्स. तो जिन नाउन्स के आप प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हो, जिनके बन सकते हैं, सो दे आर काउंटेबल नाउन्स. नाउ next example, Maryam found $6 silver in the toe of a sock. अब dollars plural है, already plural है, so that is countable. toe की हम plural form बना सकते हैं by the addition of s, toes, and then socks बना सकते हैं, so they are all countable nouns. Then there is the oak tree lost 3 branches in the hurricane. Okay, तो tree उसका भी प्लूरल फॉर्म बन सकता है. ब्रांचेस ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर ब्रांच है और प्लूरल्स की ब्रांचेस है, दोनों फॉर्म्स उसके एग्जिस्ट करते हैं. एंड सेम वे हरिकेन, उसको भी हम हरिकेन्स कह सकते हैं. सो दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन. अ नॉन काउंटेबल नाउन और अ मास नाउन, इसको हम मास नाउन भी कहते हैं. इज अ नाउन व्हिच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड व्हिच रेफर्स टू समथिंग दैट वुड नॉट यूजुअली काउंट. अच्छा, तो बस अब आपके पास एक नाउन आता है ऑक्सीजन. ठीक है, थिंक ऑफ ऑक्सीजन एज अ नाउन. ये नाउन है. क्या आप इस ऑक्सीजन, आपने कभी ऑक्सीजन्स सुना है? ऑक्सीजन्स, नो जी, आपने ऑक्सीजन्स कभी भी नहीं सुना. तो जिन नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते तो वो आपके पास आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन नाउन. आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें. द फर्नीचर इज हीप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम. फर्नीचर, आपने कभी फर्नीचर सुना है? हैव यू एवर हर्ड फर्नीचर्स? नो, आपने कभी भी फर्नीचर का बस एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, दैट इज द सिंगुलर फॉर्म एंड दैट इज फर्नीचर. फर्नीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो फर्नीचर इज आल्सो अ mass noun or non-countable noun. Then gravel is more expensive than I thought. Gravel
is a kind, it's a kind amalgamation of rock, ठीक है, amalgamation of small stones होता है, एक rock की type में कोई चीज होती है, लेकिन उसको भी हम gravel कहते हैं. अगर हम एक की बात करें या ज्यादा की बात करें तो उसको हम gravel ही कहते हैं. We don't call them gravels, ठीक है, हम gravels नहीं कहते हैं. So again इसका भी plural form exist नहीं करता. तो जिन nouns के plural form exist नहीं करते तो they fall under the category of mass noun, non-countable nouns. So you can count the countable nouns and you cannot count the non-countable nouns as the name suggests. Then both singular and plural form exist for countable nouns, and for the non-countable nouns there is no plural form, only the form that exists is the singular form. Okay. Then there are collective nouns. Collective nouns क्या होते हैं? A collective noun is a noun naming a group of things, animals or persons. For example, देखिए एक जो हमारे पास collective nouns होते हैं ना, ये पूरे एक group को जब एक पूरे group को हम एक single नाम देते हैं. When we represent a whole group by a single unit, तो उस single unit को हम कहते हैं collective noun. ठीक है, a collective noun is a noun naming a group of things, animals or persons. ठीक है, इसमें आप इसके जो अंदर जितने भी जो ग्रुप है ना, तो ग्रुप है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेंबर्स होंगे ना, तो आप उन मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, बट वी जनरली रेफर टू इट एज अ सिंगल, उसको हम वन यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप जो आपके जो नॉर्मल डे के एग्जांपल देते हैं, अ पैक ऑफ वुल्फ्स, अ पैक ऑफ वुल्फ्स, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. सो दिस पैक, अ पैक is a collective noun. A pack of wolves means a group of wolves. तो इधर the group of wolves को हमने एक unit से represent किया, and that is a pack. ठीक है, so that is the collective noun. Then again there is a swarm of bees, a nest of ants, a class, a group of students is called a class, a group of geese is called a flock. तो ये आपको स्क्रीन पे जितने भी नजर आ रहे हैं, तो ये सारे हैं collective nouns. So what are collective nouns? When we represent a group of people, a group of animal or a group of things by a single unit, जब हम एक नाम से represent करते हैं, so that is collective noun. उस एक single unit को हम collective noun कहते हैं. Okay जी, so this was all about noun. जी, I have written a line. The words can belong to more than one type of nouns. Okay, a single word, एक लफ्ज, can belong to more than one type of a noun. So one word at a time can be countable. It can be uncountable. It can be concrete. It can belong to one category. It can belong to two categories. It can belong to three categories. Even it can belong to four categories. So this is something that shouldn't confuse you at any point. ठीक है, वेव को अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको किस टाइप से बिलोंग करता है, so you better say this is a concrete noun and this is uncountable noun, and I would say excellent. ठीक है, look at son-in-law. So this is a compound noun. ठीक है, as a whole तो ये एक single word है, but it is a combination of three different words. Son-in-law. So these are the compound nouns. So those nouns that are formed by the combination of different words is called a compound noun. Simple. Okay, फिर इसमें hyphenated और non-hyphenated words हैं. जैसे कि son-in-law hyphenated है because you write son, then hyphen, then in, then hyphen, and then law. Son-in-law उसको आप hyphens डाल के ये word create करते हो. So this is called hyphenated compound noun, and then there are some other examples that are non-hyphenated जो इस वक्त मेरे mind में कोई example नहीं आ रही. Okay. So that was compound noun, when a noun is formed by the combination of different words. Okay, you got it?